So these are the disease which are caused in animals by the microorganism bacteria, which is causing the disease in the cattle and poultry birds both. ठीक है बेटे? In the cattle, the disease is known as anthrax. In the and tuberculosis. In the poultry birds like hen वगैरह, उसमें भी tuberculosis, fowl cholera and diarrhea. Okay. In the same way, you can write virus also causes the disease. One is foot and mouth disease. Virus जो cattle में cause करता है, foot and mouth disease cause करता है. ठीक है? One disease which is foot and mouth disease. Then cowpox. Cowpox and other is rinderpest. ठीक है? Cattle plague जिसको कहते हैं. rinderpest. Okay? ये सारी diseases virus cause करता है in case of cow. Okay? Now, in case of poultry, it will cause fowl pox, and you are aware बेटे bird flu तो बहुत बारी होता है, swine flu and all flu. We are also suffer from that flu. So there are bird flu. And one is Ranikhet. ठीक है? Ranikhet, the disease which is caused in the poultry birds by viruses. ठीक है? So you can write down in animals, bacteria and virus cause disease. The bacteria which is causing the disease in cattle are, the diseases are anthrax and tuberculosis. In the poultry birds, these are tuberculosis, fowl cholera and diarrhea. In case of the virus which cause disease in the cattle is foot and mouth disease, cowpox and rinderpest. And in case of poultry birds, it is fowl pox, blue flow and Ranikhet. These diseases are being caused by the microorganism in the poultry. Okay? In the same way, bete, the diseases are being caused in plants also. Hope you have written this. Now you will study the diseases caused by the microorganism in plants. Let us see these diseases. And these diseases are being caused to the plants like wheat, rice, potato. आपने red देखा होगा, apple, orange, है ना? तो इन सब में ये diseases होती हैं. ठीक है? अब ये diseases transmit कैसे हो सकती हैं? Seed से हो सकती हैं, air से हो सकती हैं, soil से हो सकती हैं. ठीक है बेटे? So in plants, several microorganisms also causes the disease, and these disease are being caused to wheat and cotton and like these plants, and these are transferred by seed itself, air and soil, you can say anything. Okay? So now let us do the various plant diseases and caused by which microorganism. So here you will study about 3 microorganisms. One is bacteria, other one is fungus, and other one is virus. So most of the diseases in plant will see it is caused by fungi itself, that is fungus. 1 of bacteria and 2 of virus you will study. Okay? 1 is of bacteria you will study and 2 of virus. So let me complete for virus and bacteria, and then we will write about fungus. Okay? So now diseases in the plants. So write down diseases in plants. So as I told you, bacteria, so you will write bacteria से cause होती है और 2 viruses से होती है. पहले तो यही लिखिए. उसके बाद you will write down caused by the fungi. ठीक है? So bacteria जो है
वो कौन सी प्लांट डिजीज करता है बेटे? दैट इज ब्लाइट. ओके, एंड इट इज कॉज्ड इन विच प्लांट? दैट इज राइस. ओके, that is rice. So write down the disease name is blight and it is caused in rice. Okay, so bacteria कौन सी disease cause करता है? Blight. And the plant which is infected by the disease is known as rice. Okay, so next, the diseases are caused by the viruses. In case of plants, these are tobacco mosaic, and again the name itself suggests this disease is caused in tobacco. As the name suggests, the disease is caused in tobacco. Okay. Now next is yellow vein mosaic. Yellow vein mosaic, and this disease is caused in bhindi. ठीक है, it is caused in bhindi okra. ठीक है बेटे. तो टुआन डिजीज caused by bacteria. Bacteria से blind, ये किसमें होती है? राइस में. Two are caused by virus, that is दोनों are mosaic. One is tobacco mosaic and other one is yellow vein mosaic, and this is called cause in tobacco and okra or bhindi. Okay, now the सारी disease जो हम करने जा रहे हैं, there are approximately 5 diseases which are being caused by not the bacteria, not the virus. It will be caused by fungi. Okay, so all the disease which we are going to do is it will be caused by fungi. So first is rust, जंग लगना, है ना, rust. अब सारी फंगस की डिजीज करो. Now fungi. The first disease is rust. ठीक है, रस्टिंग हो जाना, रेड कलर हो जाना. तो ये किस में होती है बेटे? वीट में, मस्टर्ड में. ठीक है, इट इज कॉज्ड इन वीट और मस्टर्ड. ओके, नेम इटसेल्फ सजेस्ट, रस्ट से आपको आधा क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट इज अगेन बाय द फंजाई सेल्फ. अब सारी फंगस की ही आएंगी. That is a fungus itself. Now it is red rot. वो रेड कलर का शुगर केन में लाइन से पील होनी शुरू होती है. That is red rot that occur in sugar cane. That occur in bete sugar cane. Next is again of fungi, that is wilt. Wilt, और ये किसमें होती है ये डिजीज? इट इज कॉज्ड इन चिकपी. वो जो व्हाइट कलर के छोले खाते हो आप, दैट इज चिकपी, उसमें विल्ट है. ठीक है, दैट इज इन द चिकपी. नेक्स्ट इज टिक्का, अगेन ड्यू टू फंगस. लेट मी राइट हियर, अगेन ड्यू टू फंगस. टिक्का, this is caused in, nowadays you eat most, हमने लोहड़ी में भी खाया था, that is groundnut, मूंगफली, that is in groundnut. Okay, the last but not the least is smut, which is caused in wheat. Smut, again because of this fungi. That is in again wheat. Okay,
So we have done the various diseases caused by the microorganism in the plants too. So we have seen that one disease is blight, which is caused by bacteria and which is caused in rice. Then tobacco mosaic and yellow vein mosaic, these both are caused by virus. Tobacco mosaic is a disease which is caused in tobacco, and yellow vein mosaic is a disease which is caused in bindi or okra. Then we have done the various diseases caused by the fungi. The first is rust, which is caused in wheat or you can say mustard. Then red rot, which is caused in sugar cane. Then wilt, which is called in chickpea. Then tikka, which is caused in groundnut. And then smut, which is called again in the wheat. Okay, so these are the various diseases which are being caused in the plants with the various microorganisms. And certainly to prevent these diseases, we spray chemicals to kill the microbes, and this chemical do enter in our body also. So please do wash your, we can say, plants before eating. Okay, so these are the various diseases caused in different type of the plants. Okay, so you have to learn it. This is for MCQs. Now, the next is microorganism cause food poisoning. We suffer a lot of food poisoning during summer season or a rainy season, क्योंकि तब उनको उतना एटमॉस्फेयर मिल जाता है, एनवायरनमेंट मिल जाता है कि फूड पॉइजनिंग वो ग्रो ज्यादा कर जाते हैं. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म cause food poisoning. ठीक है, they cause food poisoning in us. ठीक है, so you know that we eat food when the food is spoiled, when it will be spoiled, when there is not proper covering of the food है ना, when there is no proper preservation, you are not using freezers and all to preserve them. The some of the food it is written like frozen peas nowadays are coming, frozen corns they are coming, they are told to kept in refrigerators and at a very low temperature. And if you will keep in the kitchen itself, you will not keep in the freezers of your fridge. What will happen? The microorganism will grow there and cause the spoiling in the food. And that kind of food, if eaten by us, definitely that microorganism will enter in our body and cause food poisoning. Okay? Okay. So what is food poisoning and how this is caused? So you can write then microorganism. अब पहले समझो इस बात को, that grow जो food पे grow कर जाते हैं वो फिर क्या produce करेंगे वहाँ पे बेटे, toxic substance produce करेंगे. अब जो ये toxic substance जो microorganism ने produce किया है वो हमारे अंदर जब हम body के अंदर लेंगे तो it will cause the poisoning. इसके कारण हमें डिजीजेस हो सकती हैं और उससे हमें कहते हैं हमें फूड पॉइजनिंग होगी. ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्पॉइल्ड फूड नहीं खाना चाहिए. अगर फूड से गंदी सी स्मेल आ रही है तब नहीं खाना चाहिए. अगर हमें लगे कि कुछ कलर में चेंज आ गया, कुछ टेस्ट में चेंज आ गया, तब भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें फूड पॉइजनिंग से हमें पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमें वॉमिटिंग जैसा फील होना शुरू हो जाता है, हमें हेडेक होना शुरू हो जाता है. सर्टेनली वॉमिटिंग तो होती है क्योंकि हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो कहते हैं कि जो गलत चीजें हमारे अंदर आ गई हैं वो बाहर निकलें. हमें डायरिया, लूज मोशंस वगैरह भी होने शुरू होते हैं. बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्ट करेगा, तो वो जो हमारे अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस गए हैं उसको उसने बाहर निकालना है. समटाइम हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा इन टॉक्सिक सब्सटेंस के खिलाफ लड़ेगी. जब इट विल फाइट अगेंस्ट दैट सब्सटेंस, हमें फीवर भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम वॉमिटिंग, डायरिया या एब्डोमिनल पेन होना, उसके अलावा हमें हेडेक वगैरह या फीवर वगैरह भी हो जाता है ना.
तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, यू कैन राइट द डेफिनेशन, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, write the definition, microorganism that grow on our food, microorganism that grow on our food sometimes produce toxic substance. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड पे ग्रो करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटे, इट विल प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस which are harmful for our health, which are harmful for our health. ठीक है, the microorganism that grow on our food sometimes produce toxic substance which are harmful for our health, harmful for our health. Now when we eat the toxic substance produced by the microorganisms, the toxic substance produced by the microorganism make the food poisonous. ठीक है, causing serious illness, causing serious illness called as food poisoning. Okay, so bete microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance which are harmful for our health. Okay, the toxic substance produced by the microorganism make the food poisonous, causing serious illness called as food poisoning. Okay, now how you will identify that your food is spoiled, it is being spoiled by the microorganism. How you will identify the food spoil हो गया, how you will identify, by the change in color, the unpleasant taste, you can write yourself, write down, you can identify when there is unpleasant taste, unpleasant smell, yeah, there will be change in order, taste, स्मेल. ठीक है, इससे हमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या है, और राइट डाउन द सिम्टम्स ऑफ द फूड पॉइजनिंग. ठीक है, सिम्टम्स में वॉमिटिंग, विल सफर विद द वॉमिटिंग, we will suffer with the diarrhea, that is vomiting come loose motion, both diarrhea. तो हमें याद है हम ORS पीते हैं, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन लिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स निकले हैं वो फिर से हो जाएं. देन हम मेडिसिन लेते हैं, हम बाहर से एंटीबायोटिक्स खाएंगे कि जो हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए हैं, दे मस्ट बी किल्ड. फर्स्ट ऑफ all our immune system will fight against that. ठीक है, so when immune system will fight, we will suffer from vomiting, we will suffer from diarrhea, there will be pain in our abdomen, so there will be abdominal pain, and we can suffer from headache and fever too. ठीक है, we can suffer from headache and fever too. Now write down the bacteria and the fungi causing the food poisoning. Write the examples of the bacteria and fungi causing the food poisoning. ठीक है, तो पहले बैक्टीरिया के एग्जाम्पल लिखो. साल्मोनेला, राइट डाउन, एग्जाम्पल इज Salmonella. Okay, this is the bacteria which causes the food poisoning. Next is Staphylococci. Write down Staphylococci. Okay, Staphylococci. Clostridium. Clostridium is the various bacteria which cause spoiling the food. ठीक है,
Likewise, the fungus are aspergillus. We have already drawn the diagram of aspergillus. ठीक है? And penicillium. पेनिसिलियम में सारी वेराइटीज होती हैं बेटे, ये नहीं कि एक तरह का। पेनिसिलियम नोटाटम वी हैव स्टडीड वर्ड, हमारी एंटीबायोटिक सिंथेसाइज करते हैं, तो सो मेनी पेनिसिलियम्स आर देयर, सो मेनी क्लास सब क्लासेस आर देयर। ओके, तो पेनिसिलियम, ठीक है। So these are the various bacteria and fungus which cause the food poisoning in our food. तो हमें आगे क्या करना चाहिए कि हमारे फूड में फूड पॉइजनिंग ना हो, हमें फूड प्रिजर्वेशन करनी चाहिए। जैसे आप कुरकुरे और लेस खाते हो ना, घर पे मम्मा चिप्स बना के दें, तो आज अगर मम्मा ने चिप्स खाए ना तो आप 2 दिन के बाद कहोगे पुराना हो गया, है ना। जैसे मम्मा ने आज अगर नींबू पानी बनाया ना और बाहर रख दिया किचन में, हमने नहीं पीना, ये तो सुबह का बना हुआ है, ये तो सुबह का बना हुआ है, हम कल नहीं पी सकते। मगर जो कोक ना सदियों की पड़ी होगी, है ना, शॉप्स में जाते हैं, वो बड़ी टेस्ट से पीते हैं हम, उसको कुछ नहीं होता, और मम्मा का आज का नींबू पानी बनाया वो खराब हो जाता है, हम नहीं पी सकते, ये सुबह की बनी हुई है, ये तो खराब हो गया होगा। अब अगर ये खराब होता है तो फिर आपकी कोक भी खराब हो जानी चाहिए जो आप पीते हो मजे से, है ना, आराम से। धूप में सड़ी होगी वो फ्रिज में लगा देंगे, सब गर्मियों में आपने देखा होगा, यू लिम्का देखा होगा, पहले तो वो धूप में पड़ी रहती है, फिर बाद में फ्रिज में लगाते हैं। अब तो चलो कोरोना आ गया, फिर लंच ब्रेक में हम इतनी जोर जोर से भाग भाग के रिसेस में जाते थे, और वो कोल्ड ड्रिंक इतनी टेस्ट से पीते हैं, हम कोक पी रहे हैं, हम लेस खा रहे हैं, हम कुरकुरे खा रहे हैं, तब हमें याद नहीं आता कब के बने हुए हैं, बस अब तब एक्सपायरी डेट पढ़ते हैं हम खाना शुरू कर देते हैं। अब वो क्यों नहीं खराब होते, हमारे घर में नींबू पानी बना क्यों खराब हो जाता है, यही तो बात है प्रिजर्वेशन की। उसमें ऐसा क्या ऐड किया जाता है कि वो प्रिजर्व हो जाती है। लेस कुरकुरे के पैकेट में इतनी सारी हवा जो भरी होती है, वो किस चीज की भरी होती है कि आपके जो लेस और कुरकुरे हैं वो खराब नहीं होते। यू हैव सीन एयर उसमें, तो एयर किस लिए भरी होती है, अगर एयर ना भरी हो तो आप देखा करो लेस भी खराब हो जाते हैं, अगर पैकेट में से निकली हो कुछ भी आपका खराब हो जाता है, क्योंकि वो जो जो वो भरा होता है, विल टॉक अबाउट, वो एक तरह का प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपकी फूड की ऑक्सीडेशन नहीं करवाने देते, देयर इज नो एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, तो आपका जो फूड है उसकी खराब नहीं होता। अदरवाइज बना तो वो भी पुराना है, ठीक है, बना तो वो भी पुराने हैं, मगर 6 6 महीने पुराने हम खा रहे हैं, तो क्या कर रही है हमारी फूड इंडस्ट्री, वो प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर रही है हमारे फूड में कि उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करें, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे तो हमारा फूड खराब नहीं होगा। वही फूड जो हम घर पे बनाते हैं, घर पे बटर बनाया हो तो उसमें से स्मेल जल्दी आना शुरू हो जाती है, आती है कि नहीं आती, 1 2 3 गर्मियों में तो बनाओ तो बहुत जल्दी आ जाती है, वो रैंसिड हो जाता है, रैंसिड मतलब वो खराब हो जाता है। और यही जो हम अमूल का बटर और वेरका का बटर लेके आते हैं, वो 12 मंथ्स लिखा होता है, 12 मंथ्स तक चलेगा, ये खराब होना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें ऐसी चीजें डाली जाती हैं कि हमारी उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना ग्रो करे। इन द सेम वे दही जो हम घर में जमाते हैं, कल हमारी खट्टी हो जाती है, हमने आज की जमी है कल खा लेनी है, और ये तो पुरानी होगी, और वो वेरका का और जो आजकल मेट्रो के वो बड़े बड़े वो घड़े से चले हैं, वो तो हफ्ता हफ्ता खाई जाएगी हम, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है कि एक्सपायरी डेट ये है। तो ऐसा क्या कर देते हैं, वो चमत्कार थोड़ी ना, हमारे लिए फूड प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं जो हमारे फूड को खराब होने से बचाते हैं। घर में ऐसे केमिकल्स हम ऐड नहीं करते। प्रिजर्वेटिव यस, नो डाउट, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी चीज नहीं, जो फ्रेश चीज है, तभी तो पुराने जमाने के जो लोग थे उनकी बॉडी दे आर स्टिल एक्टिव। हमें जल्दी बीमारियां भी फील, कुछ भी हमें जल्दी हम डिजीज कॉज हो जाती हैं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव क्यों नहीं इफेक्ट करेंगे हमारी बॉडी को, है तो केमिकल्स ना, हाँ वी ईट मेडिसिन देन, है तो ये केमिकल्स।
जो भी प्रिजर्वेटिव्स हैं ये सिंथेसाइज करे गए हैं लैब में कि हमारा फूड खराब ना हो, तो ट्राई टू ईट फ्रेश फूड। पुराने जमाने में तो ये होता था कि आज जो सब्जी बनी आज ही खानी है जी, हमने प्रिजर्व नहीं करनी, आज सब कुछ फ्रेश वेजिटेबल, आजकल फ्रोजन वेजिटेबल्स आ रही हैं, फ्रोजन फ्रूट्स आ रही हैं, हमें गर्मियों का वाटरमेलन सर्दियों में मिल रहा है, तो वो फ्रेश थोड़ी ना जो एकदम से तोड़ा हुआ। कभी आप देखो विदाउट एनी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, और बाग से या जब ऑर्चिड्स में जाते हो आप वहां से तोड़ के खाओ, उनका मजा ही अलग होता है, दैट इज वेरी मच फ्रेश। और वो हमारी बॉडी को भी वैसे लगे। हाँ, अब हमारी बॉडी के अंदर इतने केमिकल्स भर गए हैं एंड वी आर आवर बॉडी इज नाउ प्रोन टू केमिकल्स, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, इतने हम पेस्टिसाइड्स वगैरह खा जाते हैं, इतनी हमारे अंदर डीडीटी जा चुकी है। तो वी विल डू कि हम फूड की प्रिजर्वेशन कैसे करें, नेचुरल मेथड से करें या केमिकल मेथड से करें। जितने हम नेचुरल मेथड से प्रिजर्व करते हैं वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, जितने आप केमिकल्स यूज करते हो बेटे उतने हमारे लिए डेंजरस है। नेचुरल मेथड जैसे मम्मा अचार डालते हैं, दैट इज अ नेचुरल मेथड, वहां पे केमिकल्स नहीं डाला जाता, वो तेल में रख देते हैं नमक मिर्च डाल के, तो तेल दैट इज अ नेचुरल मेथड यू आर यूजिंग, तो उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, वो हम खुशी से खाएं। चलो विल कंटिन्यू टुमारो विद द फूड प्रिजर्वेशन।